So we have started with our pharmacodynamics. In the previous sessions, we have seen about the general pharmacology. We have seen important definitions, general pharmacology definitions, absorption, distribution, metabolism, elimination. That is a kinetics. We have also seen some part of dynamics like receptors, mechanism of drug action, and all that. So after that, we are going to see today types. Okay, adverse drug reactions. So it is a part of your pharmacodynamics known as adverse drug reactions. We are going to see types of adverse drug reaction, mechanism of adverse drug reaction, and then types of hypersensitivity reactions, allergic reactions, and all the examples of drug causing different rate of adverse drug reaction. So again, this part is very important. So first of all, what do you mean by adverse drug reaction? सबसे पहले adverse drug reaction किसको क्या होता है? So adverse drug reaction is nothing but the any noxious or any undesired or any unintended or any other effect other than desired pharmacological effect. So whenever you are taking a drug for particular situation or particular ailments, suppose you are suffering from fever, so you are taking paracetamol, and what paracetamol is supposed to do? So paracetamol is supposed to decrease your body temperature because you are suffering from pyrexia or increased fever. So paracetamol is supposed to do your decrease in the temperature of your body. But if along with that, if paracetamol does other thing, like for example, it irritates your GIT or it causes some allergic reaction on your skin. So that is nothing but the noxious effect or undesired effect. So desired effect मतलब क्या होता है कि जो जिसका काम है वो काम उसने करना चाहिए. क्या आप बोलते हो ना कि अरे ये पर्टिकुलर मेरा काम है कर दें, तो उसने उतना ही काम करना चाहिए, फालतू में दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए. तो उसी तरीके से ड्रग का काम क्या है? सपोज आपको बुखार है और बुखार में पैरासिटामोल दिया है डॉक्टर ने. पैरासिटामोल का काम क्या है कि आपका बुखार कम करे, ना कि आपको डायरिया करे, ना कि आपके ना कि आपके स्टमक में एसिडिटी करे, ना कि आपको दूसरा कोई प्रॉब्लम हो जाए. ओके, सो व्हाट इज द desired effect, what is the undesired effect? Desired effect nothing but there is a main pharmacological effect of drug. So desired effect is known as the main pharmacological effect of drug. What is undesired? Other pharmacological effect of drug then required. So any noxious or undesired or unintended effect of drug when drug is used in the prophylaxis or treatment or diagnosis. So prophylaxis means to prevent, diagnosis and treatment. When drug is used in the prophylaxis, diagnosis or treatment. So if any other effect or any noxious or undesired or unintended effect or other effect than main pharmacological effect, that is known as a adverse drug reactions. Okay, so when drug is used in the prophylaxis, diagnosis or treatment, that is known as a adverse effect. Now there is one branch of your pharmacology which deals with the study of adverse effect. This branch is known as a pharmacovigilance. The pharmacovigilance is nothing but the branch of pharmacology that deals with the study of adverse effect of drugs. That is a pharmacology. It deals with the epidemiological study of adverse drug reaction. So what do you mean by epidemiological study or epidemiological study? So epidemic means what? A certain kind of population. What do you mean by epidemics? A certain kind of population. Suppose आप 10 जन हो, एक जन हो, दो जन हो, या फिर आप 10 जन हो, 20 जन हो. So if number is increased, suppose you are 500, so that is known as an epidemic. 500 or up to few thousands or up to few lakhs. So that is known as epidemics. So study of any undesired effect or unintended effect in the larger population known as epidemiology, and that is done by your pharmaco pharmacovigilance. So pharmacovigilance is the branch of your pharmacology which deals with the study, monitoring, and reporting of your adverse drug reaction of various drug. So adverse drug reaction is clear. Right? There are different types of adverse drug reaction. So normally we used to denote by different words. So the very frequently or very commonly used word for adverse drug reaction is a side effect. So side effect, but actually side effect will not include all kind of adverse reaction. तो साइड इफेक्ट नॉर्मली अपन बोलते हैं बोलने के लिए, बट साइड इफेक्ट्स में क्या है कि सभी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इंक्लूड नहीं होते. सो साइड इफेक्ट इज अ सिंपल term, it is a broad term. So adverse drug reaction is a main term. Under that
one term is a side effect. So what do you mean by side effect? So side effect is any other effect than desired pharmacological effect, but which is predictable, and may or may not be extension of pharmacological effect. तो इसका मतलब क्या है? Simple. Okay. So what is side effect? Side effect is also a adverse drug reaction, but it is a predictable, and it may or may not be extension of pharmacological actions. For example, hypoglycemia caused by insulin. इंसुलिन क्या करता है? आपके ब्लड का शुगर लेवल कम करेगा. सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसको इंसुलिन दिया है. ओके, सो इंसुलिन दिया है तो व्हाट इज द यूज ऑफ इंसुलिन? इट विल डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, इट विल कॉज hypoglycemia, right? Now if you increase dose, what will happen? Again you will suffer from more hypoglycemia. If you still increase the dose, आपको डॉक्टर ने बोला है कि 10 माइक्रोलीटर का डोज लेना है आपको इंसुलिन का वंस अ डे, और आपने क्या किया? आप बी फार्म पढ़े हो, आप देरशाने हो, आपने ले लिया 20 माइक्रोग्राम, या फिर आपने दे दिया 30 माइक्रोग्राम. क्या होगा? वो पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा कम हो जाएगा और ही मे सफर फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिक शॉक. Hypoglycemia मतलब decrease in the blood sugar level. So side effects are predictable. You can predict that, and it may or may not be extension of pharmacological action, right? So first example is nothing but the hypoglycemia caused by insulin. Second example is nothing but the dryness of mouth caused by atropine. Dryness of mouth caused by atropine. So atropine क्या है? Atropine is nothing but the a cholinergic antagonist. So it is an anti-cholinergic drug, or you can say it is a anti-muscarinic drug more specifically, right? सो एसिटिलकोलिन क्या करता है कि सभी सिक्रेशन जो होता है वो बढ़ा देगा, मतलब सलाइवरी सिक्रेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, या फिर आपका सीबम, या फिर आपका स्वेट, जितने भी सिक्रेशंस है वो गैस जो एंडोक्राइन सिक्रेशंस है वो बढ़ा देगा एसिटिलकोलिन. ना उसका एंटागोनिस्ट कौन है? एट्रोपिन. ऑब्वियसली ये क्या करने वाला है? आपको मालूम है, ये सभी सिक्रेशन को कम करने वाला है. बट एट्रोपिन व्हेन यू आर यूजिंग फॉर इट्स एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट, आप अगर एट्रोपिन यूज कर रहे हो एंटी स्पाज्मोडिक के लिए, आपके पेट में क्या है कि स्पाज्म है, आपके पेट में मुर्ड़ा आ गया, उसके लिए आप एट्रोपिन लेंगे तो उसने वो मुर्ड़ा ही क्लियर करना चाहिए, उसने वो स्पाज्म ही रिलीव करना चाहिए. ओके, बट एट्रोपिन एज अ एंटीकोलिनर्जिक, so it will also relieve your intestinal spasm, but also will decrease the salivary secretion. And if it decreases salivary secretion, it is known as a dryness of mouth. So dryness of mouth is a side effect of your atropine, right? So side effect, they are a extension of pharmacological action or may not be extension of pharmacological action, and most of the time they are predictable. So side effect is a type of adverse drug reaction, right? And it is a predictable, most of the time it is a predictable, ये predict कर सकते हो. Okay? Dryness of mouth by atropine, hypoglycemia by insulin, right? Now second term is untoward effect. Second term is untoward effect. Untoward effect. Again, it is a undesired effect produced by a therapeutic dosage of drug. Okay, so again, it is a type of adverse drug reaction, right? But what is the difference between side effect and untoward effect? So undesired effect produced by therapeutic dose of drug. Therapeutic dose of undesired effect produced by therapeutic dose of drug. So ये भी undesired effect है, ये भी therapeutic dose से produce करता है. But most of the time it is a pharmacological extension. Most of the time it is an extension of pharmacological, and this one is not an extension of pharmacological. ये extension नहीं है. For example, potassium loss due to diuretic. So every diuretic except potassium sparing diuretic. तो सभी diuretic जो है वो सोडियम को लॉस करेंगे, पोटेशियम को लॉस करेंगे. कुछ diuretic जो होते हैं loop diuretics, so even they loses the calcium. Okay? So it is obvious that diuretics, if they are used, they are going to lose your potassium. So if potassium loss is there, it is known as hypokalemia. Okay, hypokalemia. So untoward effect, that is the loss of potassium due to diuretics, right? Now third definition is nothing but the toxic effect. देखो पहला होता है side effect. It is a extension or may not be extension of pharmacological effect. ठीक है, and most of the time it is a predictable. ठीक है, it is a predictable. Now untoward effect क्या है? It is again, it may or may not be predictable, but it is definitely not a pharmacological extension of pharmacological response. Okay, again it is an undesired effect produced by therapeutic dose of drug. So example is nothing but the potassium loss by diuretics. Now third definition is a toxic effect. अभी ये toxic effect क्या है? So toxic effect means देखो यहाँ पे toxicity हो जाएगा.
when you will have toxicity when you are using toxic dose क्या होता है higher dose than therapeutic dose. It is due to a use of toxic dose. It is due to use of higher dose. So you can see over here. So due to use of higher dose. Example is nothing but the respiratory depression caused by morphine. मॉर्फिन क्या है? इट इज ओपाइडल एनाल्जेसिक. मॉर्फिन क्या है? जो ओपीएम का प्लांट होता है उसमें से जो अल्कोलाइड मिलता है आपको फिनाइथ्रिन टाइप का, so one of that is a morphine. So it is a analgesic. ये पेन किलर होता है, right? Nowadays it is no more used. It is only used in case of terminal stage of cancer. कैंसर का पेशेंट अगर लास्ट स्टेज का, उसको अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो उसका पेन कम करने के लिए मॉर्फिन है. एंड दूसरा और एक यूज है मॉर्फिन का. सो इट इज आल्सो यूज्ड इन द मिलिट्री ऑपरेशंस. अगर मिलिट्री में किसी को कोई गोली लग गया तो वो चिल्ला चिल्ला के मर जाएगा, उसको पहले ही इसका मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दी. मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया, उसको गोली कितना भी लगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, वो हंसते रहेगा. बिकॉज मॉर्फिन प्रोड्यूसेस यूफोरिया, false sense of well-being. So morphine is only resort drug for terminal stage of cancer and in the military. Toxic effect means what? So due to use of higher doses or due to use of toxic doses. So if toxicity is there, that is not a toxic dose. For example, paracetamol. Paracetamol will cause hepatotoxicity. Paracetamol will cause hepatotoxicity. ये paracetamol normal drug है. What is the dose of normal dose of paracetamol? Normally paracetamol का dose होता है 500 milligram to 1 gram. That dose is not going to cause hepatotoxicity. नॉर्मली जो पैरासिटामोल का डोज होता है आपका, वो डोज आपको हिपेटोक्सिटी नहीं करेगा. हिपेटोक्सिटी मतलब क्या है? लीवर को टॉक्सिटी करेगा, लीवर का डैमेज करेगा, राइट? सो पैरासिटामोल इन अ नॉर्मल डोज विल नॉट कॉज हिपेटोक्सिटी, बट पैरासिटामोल इफ यू टेक बियॉन्ड द 6 ग्राम पर डे, अगर 6 ग्राम ले लिया आपने ड्रग, 6 ग्राम पर डे, ओके, so that paracetamol is going to definitely affect your liver. 6 gram per day paracetamol will cause hepatotoxicity. So toxic effect, side effect means again it is a extension or may not be extension of pharmacological effect, or most of the time it is a predictable dryness of mouth caused by atropine. Untoward effect, undesired effect produced by therapeutic dose of drug, for example potassium loss due to diet. Toxic effect, it is produced by toxic dose of drug, for example respiratory depression caused by morphine and hepatotoxicity caused by paracetamol in a higher dose, right? Now what do you mean by intolerance? So intolerance is nothing but the failure to tolerate drug. Failure to tolerate the, क्या intolerance क्या होता है? It is a failure to tolerate the drug. So intolerance क्या है? It is a failure to tolerate the drug. अभी ये कैसे होगा? Suppose if you are prescribed for particular disease or particular ailment with a drug, आपको एक ड्रग दिया है डॉक्टर ने, ठीक है, कुछ डिसीज के लिए. अगर वो ड्रग लिया आपने, ओके, अगर वो ड्रग लिया आपने कि आपको सडनली आपका क्या हो गया कि आपको वोमिटिंग चालू हो गया, या फिर सडनली आपका डायरिया चालू हो गया, सडनली आपका कुछ स्किन के ऊपर रिएक्शन आ गया इमीडिएटली. सो दैट इज नथिंग बट द फेलियर टू टॉलरेट ड्रग. योर बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट ड्रग, सो दैट इज नॉट द फेलियर ऑफ ड्रग. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल एक होता है a single dose of streptomycin. Single dose of streptomycin it can cause a hearing problem. Single dose of streptomycin can cause hearing problem. It is an intolerance. Okay. Now next definition is nothing but the idiosyncrasy, then allergy. We will see these two definitions in upcoming slide because there I will be able to explain you in a very good manner. So adverse drug reaction कितने टाइप के होते हैं? ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का होता है adverse drug reaction. Adverse drug reaction बहुत सारे टाइप के होते हैं. तो उसमें अपन क्या बोलते हैं कि एक ही टर्म बोलते हैं साइड इफेक्ट, बट साइड इफेक्ट, देन अनटोवर्ड इफेक्ट, देन टॉक्सिक इफेक्ट, देन intolerance, so all these comes under the heading of ADR. So adverse drug reaction is nothing but any undesired, unintended, any noxious effect produced by drug when it is used in the diagnosis, treatment and prophylaxis. So one branch is there known as pharmacovigilance, which deals with the study of epidemiological study of adverse drug reaction. So next part we'll see types of adverse drug reaction. Now how many types of adverse drug reactions are there? There are different types of adverse drug reaction. यहाँ पे 6 types of adverse drug reaction है. देखो type A, so type A, type B, type C, type D, type E and type F. तो इसको A B C D E F ऐसे याद रखो. Now what is meant by type A adverse drug reaction? तो टाइप ए किसको बोलेंगे? तो टाइप ए फॉर augmentation, A for augmented. Okay? So augmentation means what? So it is an extension of pharmacological effect.
इज एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एग्जांपल मैंने पहले ही बोला आपको इन प्रीवियस स्लाइड. So type A adverse drug reaction, they are known as augmented adverse drug reaction or they are an extension of pharmacological action. Okay, extension of pharmacological action. For example, hypoglycemia caused by insulin. Hypoglycemia caused by insulin or hypoglycemia caused by oral hypoglycemic drug और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग. अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको आप डायबिटीज के पेशेंट हो, आपको बोला है कि आपको 10 माइक्रोलीटर क्या लेना है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है मॉर्निंग में. आपने बीफॉर्म किया, आपको लगा मैंने बहुत कुछ किया है, मुझे सब मालूम है. आपने 10 माइक्रोलीटर की बजाय क्या लिया, 20 माइक्रोलीटर है ना. आप देर शाने हो इसलिए 20 माइक्रोलीटर ले लिया आपने. क्या होगा, तो हाइपोग्लाइसेमिया होगा, आपका बॉडी का शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा. सो यू मे सफर फ्रॉम वोमिटिंग, यू में सफर फ्रॉम आपको चक्कर आ सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है. दैट इज अ प्राइमरी कॉम्प्लिकेशंस. अगर बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिया होगा, यू विल सफर फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिक शॉक एंड यू मे डाई. सो दैट्स व्हाई इंसुलिन का अगर इंजेक्शन है, थोड़ा सा ज़्यादा इंजेक्शन अगर दे दिया नॉर्मल आदमी को, तो आदमी मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा क्यों मरा. तो इसका यूज़ मत करो किसी का, ठीक है. सो ये स्टडी के पर्पज के लिए बोल रहे हैं. नाउ okay, so type A adverse drug reaction, augmented or extension of pharmacological effect. Example is hypoglycemia caused by insulin. Now you know that insulin क्या है, insulin is a hormone which reduce your blood sugar level. आपको मालूम है. Okay, so you know that if insulin normally decreases the blood sugar level, if you take in higher doses, again it will decrease the sugar level in a higher amount. Okay? So that's why it can be, it is a predictable. Adverse drug reaction type A, they are augmented, they are predictable and they are dose dependent. Dose dependent. आपने 10 माइक्रोलीटर बोला है आपको, डॉक्टर ने अपने ले लिया 20, तो आप उससे भी ज़्यादा देर शान निकले, आपने क्या लिया 40 माइक्रोलीटर. 40 माइक्रोलीटर. व्हाट विल हैपन, सो योर ब्लड शुगर विल गो डाउन. जितना ज़्यादा डोज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा. ठीक है, जितना ज़्यादा डोज बढ़ाओगे आप इंसुलिन का, उतना ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा. So that's why type A adverse drug reaction, they are predictable and dose dependent. Right? Now type B adverse drug reaction. Type B, अभी ये देखो, B for Beezer. This B is for Beezer. Okay? This A is for augmentation. B is for Beezer. Now what is meant by this term Beezer? Beezer means sudden. Sudden means without any notice or without any alarm. ठीक है, तो आपको नोटिस नहीं है. जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आपका घर अगर डिमोलिश करना है उसको, तो वो आपको 15 दिन पहले एक नोटिस भेजता है कि आपका घर इलीगल है, रास्ते पे बनाया है आपने और ये डिमोलिश किया जाएगा, उसको गिरा दिया जाएगा. ये नोटिस भेजता है आपको 10-15 दिन पहले. बट टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आने से पहले कोई नोटिस नहीं भेजा है. इट इज अ बीजर. बीजर मीन्स सडन. Okay, so sudden effect or bizarre effect or without any notice, they are known as a type B. Most of the time, idiosyncratic reaction. What do you mean by idiosyncratic reaction? So they are genetically determined. तो genetically होता है कि एक ड्रग किसी में एलर्जी कर सकता है, किसी में नहीं कर सकता. तो वो डिपेंड करता है उसके जेनेटिक इसके ऊपर. फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन. व्हाट इज द एग्जांपल? allergic reaction to the penicillin or anaphylactic reaction to the penicillin. पेनिसिलिन क्या है? इट इज अ एंटीबायोटिक. ओके, सो अगर आपने पूरा क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें के सबको पेनिसिलिन का डोज दे दिया, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे विल नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट. 60 में से किसी को 99.9% तो किसी को एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ. लेकिन इन 1 lakh people, so if you inject a penicillin, so in a 1 lakh people if you inject a penicillin, so one patient may have allergic reaction. Type of adverse reaction is known as a Beezer or type B. Okay. Now penicillin का अगर एलर्जी है तो 1 मिलीग्राम भी आपको एलर्जिक रिएक्शन देगा, 2 मिलीग्राम भी एलर्जिक रिएक्शन देगा, 10 मिलीग्राम भी देगा, 1 ग्राम भी उतना ही एलर्जिक रिएक्शन देगा. Okay. So it is a dose independent. It is unpredictable because आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उसमें से कौन सा बच्चा एलर्जिक है पेनिसिलिन को आपको मालूम नहीं. So it is unpredictable, dose independent. So what is the example? Allergic reaction to the penicillin. Example important है type B for, okay, type A for augmentation, B for Beezer. ये example से याद रखो, क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है. Now type C adverse drug reaction. Type C को बोलते हैं chronic. C for chronic. Now why? What is chronic? Due to chronic use of drug.
जैसे आपके घर में कोई किसी दादा या चाचा है जिनको आपका आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस, या फिर जिनको गाउट है, घुटने में दिक्कत है, गाउट, आर्थराइटिस और गाउट. So in that condition, so it is not easily curable. So for the pain, for to relieve the pain, doctor is prescribing the painkillers or analgesic drugs for 2 or 3 months. 3-4 महीने के लिए आपको पेन किलर ही खाना पड़ता है, मतलब पूरे लाइफ तक खाना पड़ता है अगर नहीं क्लियर हो तो. So due to chronic use of drug, so you know that most of the NSAIDs they have one adverse effect. They will irritate your GIT. आपका जो GIT होता है, GIT एरिया, उसमें क्या करेंगे, ये इरिटेशन करेंगे GIT में. So GIT में इरिटेशन करेंगे, so that will leads to hyperacidity, and because of the continuous hyperacidity, you may suffer from peptic ulcer. So what is the example of type C adverse drug reaction? Simple होता है, C for chronic, due to chronic use of drug. And what is the example? Peptic ulcer caused by chronic use of NSAIDs. Peptic ulcer caused by chronic use of NSAIDs. Now type D adverse reaction. Type D, D for delay. तो ये delay किस में होता है? So delay किस में होता है? Delay होता है pregnancy में. कितना मंथ का delay होता है? अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा इस दुनिया में आने के लिए कितना टाइम लगेगा? एटलीस्ट 9 month, राइट? सो देयर इज अ 9 month डिले. आपको याद कैसे रखना है? So there is a 9 month delay to deliver that baby from a pregnant woman, right? So D for delay. Now in that period, if any pregnant woman is taking any teratogenic drug, अगर वो pregnant woman ने कोई teratogenic drug ले लिया या फिर उसको prescribe किया डॉक्टर ने, what will happen? So that drug adversely affect the fetus growing in the womb of that mother, and that may leads to developmental abnormality. So that is a teratogenicity. So what is the example of type D adverse drug reaction? So it is nothing but the teratogenicity caused by thalidomide or teratogenicity caused by other teratogenic drugs. ठीक है? Now ये भी क्या है? ये भी unpredictable होता है. It is also unpredictable. Unpredictable. आपको कौन सा ड्रग देगा teratogenicity और कौन सा नहीं, वो मालूम नहीं. जब देने के बाद में पता चलता है इसको teratogenicity है ही. Nowadays most of the drugs they are tested for teratogenic effect also. So you can say nowadays it can be predictable. Now type E adverse drug reaction. E for क्या है? E for effect, after treatment effect. A for augmentation, B for bizarre, C for chronic, D for delayed, E for after treatment effect. Now after treatment effect मतलब क्या है? Suppose you are taking a particular drug for a longer time, and if the drug is having addiction potential. जैसे होता है ना कि अगर आपको दारू पीने की आदत पड़ गई तो आप इतना पीते हो कि दारू के बिना आप जी नहीं सकते. और सडनली अगर किसी एडिक्टेड पर्सन का वो अल्कोहोल अगर आपने छुपा दिया कहीं पे, जसे मान लीजिए कोणाच्या घरीही असतात ना त्यांचे वडील वगैरे खूप पित असतात, ठीक आहे, सारखं म्हणजे डेली पित होते, त्यांना जमतच नाही. तो अगर वो डेली पीते हैं अल्कोहल और आपने सडनली क्या किया कि एक दिन उनका अल्कोहल का बॉटल छुपा दिया और उनको कमरे में बंद कर दिया, क्या होगा? ही विल क्राई फॉर दैट अल्कोहल, ही विल his body will react, that body will ask him bring me alcohol. So that is known as a withdrawal symptoms. That is known as a withdrawal symptom, sudden withdrawal symptom. अगर आपको मॉर्फिन दे रहे हैं कंटिन्यूसली, इफ यू आर एडिक्टेड टू मॉर्फिन, हीरोइन, जो भी गांजा चरस होते हैं, उसको अगर आप एडिक्टेड हो गए और सडनली आपका बंद कर दिया, वो क्या होगा? withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms. So example is nothing but the withdrawal response to the morphine. Okay, sudden withdrawal response to the morphine, or sudden withdrawal response to the alcohol, or sudden withdrawal response to the cocaine. Cocaine, कबीर सिंह तो देखा होगा, तो उसको कोकेन नहीं मिलती तो वो कैसे पागल हो जाता है. So like that. Type E adverse drug reaction is nothing but the after treatment effect or withdrawal. Example is withdrawal symptom, withdrawal response to the drugs, right? Now type E हो गया. अभी type F. Now what is F? F for failure of therapy. Okay, F for failure of therapy. Suppose आपको इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन, एंड आप गए डॉक्टर के पास. सो डॉक्टर प्रेस्क्राइब यू एजिथ्रोमाइसिन 3 टैबलेट. तो 3 टैबलेट उसने प्रेस्क्राइब किया. आपने क्या किया? पहले दिन ले लिया आपने 1 टैबलेट, ठीक है, पहले दिन ले लिया 1 टैबलेट, आपको थोड़ा सा अच्छा लगा, आपको लगा कि इन्फेक्शन गया, आपने बाकी 2 टैबलेट लिए नहीं. आपने बाकी 2 टैबलेट लिए नहीं, आपको एक दिन, जब एक दिन एक टैबलेट ले लिया
तो उस दिन अच्छा लगा आपको, आपको लगा मैं क्लियर हो गया और बाकी टैबलेट ले लें आपने, लेकिन एक दो दिन के बाद फिर से आपको इन्फेक्शन आ गया, दैट इज नोन एज अ फेल्यूर ऑफ थेरेपी ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ थेरेपी, there is a failure of therapy and relapse of disease known as a failure of therapy. So again I would like to revise these types of adverse drug reaction, आपको लाइफ में कभी भूलना नहीं है. ओके, सो टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ए फॉर ऑगमेंटेशन, दे आर एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दे आर प्रेडिक्टेबल एंड डोज डिपेंडेंट, जितना ज्यादा डोज उतना ज्यादा इफेक्ट. ओके, सो hypoglycemia caused by insulin or hypoglycemia caused by oral hypoglycemic drug. Type B adverse reaction, B for bizarre. Bizarre means sudden, sudden means without any notice, without any alarm. So it is a example is allergic reaction or anaphylactic reaction to the penicillins. Not only penicillins, or भी drugs होते हैं जैसे other antibiotics. So now these kind of adverse effects they are unpredictable and dose independent, right? Now type C adverse drug reaction, C for chronic use of drugs. Due to chronic use of drugs, so due to chronic use of NSAIDs in the arthritis, you may suffer from peptic ulcer. That is the example. What is type D adverse reaction? D for delay. डिले कितना होता है प्रेग्नेंट वुमन को, बच्चा बच्चा डिलीवर करने में 9 मंथ का. सो इन दैट पीरियड इफ दैट प्रेग्नेंट वुमन टेक्स एनी टेराटोजेनिक ड्रग और इफ इन डॉक्टर प्रिस्क्राइब टेराटोजेनिक ड्रग, सो हर would be fetus might be affected by that drug, or he may that fetus may suffer from any developmental abnormality known as a teratogenicity. So teratogenicity caused by thalidomide, or teratogenicity caused by phenytoin, teratogenicity caused by carbamazepine, teratogenicity caused by tetracycline, teratogenicity caused by various amino glycosides, teratogenicity caused by various anti-cancer drugs. So all these are the examples of this type D adverse reaction, right? Now what is type E? Type E means E for effect. What kind of effect? After treatment effect. So withdrawal symptom of drugs. So withdrawal symptom of morphine, withdrawal symptom of your pentazocine, withdrawal symptom of cocaine, withdrawal symptom of alcohol, etc., etc. Now, what is the type F adverse drug reaction? F for failure of therapy. So if you have been prescribed antibiotics 3 tablets once a day, and if you take only 1 tablet, so what will happen? For a particular time being you will feel better, but after that there will be a relapse of that infection known as a failure of therapy. So A for augmentation, B for bizarre, C for chronic, D for delay, E for after treatment effect, and F for failure of therapy. So these are the types of adverse drug reaction. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके जीपैट में, नाइपर में, डीआई में, फार्मेसी में. So you have to be careful about this. समझ लगा? Are you getting or not? Are you getting or not? Now we'll see next part in the details. What is meant by idiosyncrasy? Idiosyncrasy is nothing but the, again it is type of adverse drug reaction which is a genetically determined or genetically mediated. Okay? Then what is meant by allergy? So allergy is nothing but the, it is a adverse drug reaction of drug. Allergy is again adverse drug reaction of drug. So classification of their mechanism of adverse drug reaction. Now adverse drug reaction they may be either predictable, एक हो गया, सेकंड हो गया अनप्रेडिक्टेबल. प्रेडिक्टेबल मतलब क्या? आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका एडवर्स ड्रग इफेक्ट है. जैसे अभी सल्फोनामाइड्स, तो आपको मालूम है सबको कि सल्फोनामाइड दे विल कॉज एडवर्स इफेक्ट, सो इट इज प्रेडिक्टेबल. अनप्रेडिक्टेबल इन दैट you have allergic reaction or hypersensitivity reaction. Allergic reaction or hypersensitivity, cytotoxicity or pseudo-allergic reaction, and third one is idiosyncratic reaction. Now, idiosyncratic reaction they are known as genetically mediated adverse drug reaction. अब ये क्या है? For example, you might know that. So any oxidant drug, जो भी ऑक्सीडेशन करने वाले ड्रग्स है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमाक्विन यूज्ड इन द मलेरिया, सल्फोनामाइड्स ओके एज अ एंटीबैक्टीरियल ड्रग, then phenytoin okay, then hydrolyzine, etc. So these kind of drugs they are known as an oxidant drug. And when they are used in the patient who is deficient in the glucose 6 phosphate dehydrogenase, तो एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज. ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये हो गया ग्लूकोज 6 phosphate dehydrogenase. So if any patient is having deficiency with this enzyme glucose 6 phosphate dehydrogenase, this enzyme is required for the glycolysis of the sugar in the body. तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसके लिए ये एंजाइम लगता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज. अगर आपका जेनेटिक में डिफरेंट है, किसी में ये एंजाइम ज्यादा होता है, किसी में होता ही नहीं, so those patients who are deficient in this
enzyme glucose 6 phosphate dehydrogenase. And in these patients, if you are using any oxidant drug, for example, primaquine for malaria, okay, sulfonamides for other treatment. So these drugs they are going to cause idiosyncratic or okay hemolysis. They are going to cause hemolysis in the patient. ये सल्फा ड्रग्स या फिर आपका जो बोला है फिनेटोइन आपका जो बोला है मैंने आपका एग्जांपल okay so these drugs they are when they are given in the oxidant drug they are when they are given in the patient who is deficient of glucose 6 phosphate dehydrogenase. So in those patients these drugs will going to break down the blood का break down करेंगे known as a hemolytic anemia. Okay, so hemolysis. So hemolytic anemia caused by primaquine, hemolytic anemia caused by sulfur dioxide in a patient who is deficient with the glucose 6 phosphate dehydrogenase is the example of idiosyncratic or genetically mediated reactions. Okay, idiosyncratic reaction. So we are going to see again don't worry. So unpredictable में पहला आता है आपका idiosyncratic reaction, दूसरा आता है cytotoxic reaction. Cytotoxic मतलब क्या? So a drug which will cause toxicity to your cell. Cyto मतलब क्या? Cyto means cell. Cyto is nothing but the cell. Toxic means cell को toxicity करने वाली drug. और ऐसा reaction. Cytotoxic or pseudoallergic reaction means these kind of drug showing this allergic reaction they will destroy the cell known as cytotoxic. For example, बहुत सारे ड्रग का एडवर्स इफेक्ट आपने देखा होगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्रोथ्रोम्बोनिया, ओके थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ओके देन ओके बहुत सारे ड्रग होते हैं जो आपकी न्यूट्रोफिल्स कम कर देते हैं न्यूट्रोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. Okay, so these drugs which will decrease the platelets, some drugs will decrease the neutrophils, basophils, macrophages. Okay. So they are known as cytotoxic drug. They are known as cytotoxic, and the reaction or the adverse drug reaction is known as a cytotoxic or pseudoallergic adverse drug reaction. Now third type का unpredictable reaction में होता है allergic reaction. Allergic reaction or hypersensitivity reaction. Allergic reaction or hypersensitivity reaction. Now in this you have different type of hypersensitivity reaction. Now type 1 hypersensitivity reaction. It is known as a it is known as an anaphylactic reaction. So type 2 hypersensitivity reaction. It is known as a autoallergic reaction. Type 3 hypersensitivity is known as a complement mediated cytotoxic adverse reaction. Type 5 type 4 is known as a delayed or cell mediated hypersensitivity reaction. Now these four reactions we are going to or these four type of allergy we are going to see in detail. So remember there are different type of adverse drug reaction. In that unpredictable, predictable, and in unpredictable there is allergic or hypersensitivity reaction, and in the hypersensitivity reaction you have again four type. Type 1 immediate hypersensitivity reaction. It is a immunoglobulin E mediated. Then type 2 autoallergic reaction. Type 3 is a complement mediated allergic reaction, and type 4 one is a delayed or cell mediated allergic reaction. We are going to see in the detail. There are another terms as I told you in the very first slide. We are going to see this term separately. So intolerance means what? Inability to tolerate the drug, and for example in a single dose. So vestibular dysfunction after a single dose of streptomycin. So it is a unpredictable, and that is known as intolerance. Again, idiosyncrasy. Idiosyncrasy means it is a genetically mediated reaction. Okay, there are oxidant drugs like primaquine, sulfonamides. When they are given in a patient with the glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency, what they will do? They can then they can cause hemolysis in the patient with GPCD, G6PD. अगर प्राइमाक्विन सल्फोनामाइड्स आपका का पिनेडोइन अगर ये ऑक्सीडेंट ड्रग है और ये अगर उस पेशेंट में देंगे कौन से जो पेशेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज का deficiency है ये एंजाइम किसके लिए लगता है this enzyme is required for glycolysis. Now if in those patients if you are giving this primaquine sulfonamides pinedoine so what will happen they will cause hemolysis breakdown of blood. Okay? And that is known as idiosyncrasy. That is known as a idiosyncratic idiosyncratic reaction, right? Another example of idiosyncrasy एक example तो हो गया आपका oxidant drug they will cause hemolysis in the glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency patients. Another example is there. Okay, यहाँ पे spelling mistake हो चुका है
So it is a barbiturates. It is a barbiturates. इसका है barbiturates. Okay. So excitement caused by barbiturates. So what is the therapeutic use of barbiturate? Barbiturate का काम क्या होता है? They will depress your CNS. वो आपको CNS depress करेंगे, anxiolytic, antihypnotic होते हैं. So basically barbiturates they will depress your CNS. But in some patients जिनमें genetic problem होता है तो उनमें डिप्रेशन की बजाय वो क्या करेंगे, स्टिमुलेशन करेंगे. सो एक्साइटमेंट caused by barbiturate. Chloramphenicol induced agranulocytosis. Okay, agranulocytosis. That is also again an example of idiosyncratic reaction. Then synchronism in a sensitive patient of a single dose of quinine. Synchronism is an adverse effect of your synchronalkaloids. जो synchronism होता है, when synchronalkaloids they are used in the treatment of malaria, or particularly this quinine is used in the treatment of arrhythmia, so it may produce synchronism. So that is a idiosyncratic reaction. तो examples आपको idiosyncratic reaction के मालूम होना चाहिए, जो आपको इतना डीप में आपके प्रोफेसर लोगों ने भी बोला है. ठीक है. So idiosyncratic reactions or idiosyncrasy means what? So it is a genetically mediated reactions. So first example is nothing but the use, if you use any oxidant drug, in a patient who is a deficient of glucose 6 phosphate dehydrogenase, so drug like primapine or sulfadrels or phenytoin, they will produce hemolytic anemia, right? Or excitement caused by barbiturates. Normally barbiturates should cause depression. In some patient it causes excitement or stimulation. That is nothing but the idiosyncratic in nature. Again, agranulocytosis caused by chloramphenicol is again idiosyncratic reaction. Synchronism caused by a single dose of quinine. It is a idiosyncratic reaction. Now, what do I mean by allergic reaction? So, unrelated to therapeutic effect. जितने भी allergic reaction होते हैं, they are not related to therapeutic effect. So, they are unrelated to therapeutic effect, and they are immunologically mediated. मतलब क्या? Immunologically, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पे ये पिक्चर में आ जाए. So antibody antigen will come in the picture. So immunologically mediated. Now होता क्या है? Drug or its metabolite is treated as a antigen. आपकी बॉडी क्या करती है कि ड्रग को एज अ एंटीजन बोल के ट्रीट करती है और उसके अगेंस्ट में क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनती है. Okay, so drug or its metabolite in your body is treated as an antigen, and against that antigen your body will produce antibodies on the first exposure. जब मान लीजिए कि जैसे एक पेशेंट है, जैसे देयर वाज माय फादर, माझे वडील होते, मेरे पिताजी थे, उनको विटामिन का एलर्जी था. जब भी उनको विटामिन का इंजेक्शन देंगे तो उनका पूरा एडिमा हो जाता है, उसका उनकी बॉडी पूरी सूज जाती है. सो अपन फर्स्ट एक्सपोजर पहली बार विटामिन का इंजेक्शन दिया तो कुछ नहीं हुआ, मतलब उस टाइम पे क्या है, vitamin in the body will treat that vitamin as a antigen, or against that antigen antibody will be produced. पहली बार में कुछ नहीं होगा. सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, दूसरी बार जब इंजेक्शन देंगे आपको विटामिन का, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी है. सो दैट एंटीजन विल रिएक्ट टू द एंटीबॉडी, देयर विल बी रिलीज ऑफ इंफ्लेमेटरी केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन, पैडिकाइनिन, देन leukotrienes etc., tumor necrotic factors, platelet activating factors. So there will be inflammation, edema and pain. So that is known as allergic reaction. So allergic reaction basically होता क्या है? They are not related to pharmacological actions. They are not related to therapeutic effect. Okay, but they are immunologically mediated. So drug or its metabolite will be treated as antigen, and against which antibody will be formed upon first exposure, and upon subsequent exposure, so there will be antigen antibody reaction, and there will be release of inflammatory mediators. इसमें कौन आता है? हिस्टामाइन आता है, then bradykinin, then prostaglandin, and then tumor necrotic factor and or platelet activating factor. So they will do edema, fluid retention, increase the permeability, pain. Okay, so that is known as the allergic reaction. Allergy in organ like skin. So most of the time these allergic reaction they occurs in a various organ like skin के ऊपर होगा या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर होगा. ओके, जीआईटी के ऊपर हो सकता है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. ओके, सो एलर्जिक रिएक्शन दे में अफेक्ट योर डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अगर स्किन को अफेक्ट करेगा तो आपके स्किन के ऊपर क्या होगा? एलर्जिक रिएक्शन, रेडनेस, वेस्कुलाइटिस, रेडनेस, इचिंग. ओके,
or there is a development of skin rash, etc. etc. If that allergy is in a respiratory tract, so you may suffer from apnea, asthma, or difficulty in breathing. So, for example, your penicillins cause anaphylactic reaction. So they particularly cause anaphylaxis or inflammation in the your respiratory tract, and patient may die because of the insufficient oxygen. Right. So allergic reaction. Now there are different types of allergic reaction. So type 1 allergic reaction. Type 1 or type first allergic reaction, they are known as anaphylactic reactions. So anaphylaxis. Type 1 allergic reaction. We have seen the classification. We will see in the detail now. Type 1 anaphylactic reaction or type 1 hypersensitivity reaction or type 1 allergic reaction. Type 1 allergic reaction or type 1 hypersensitivity reaction, they are also known as an anaphylactic reaction or anaphylaxis simply. What happens in this case, when you will take a drug first time, so drug will stimulate antibody, means drug will be treated as an antigen, and against that antibody will be produced. एक क्वेश्चन आ चुका है इसमें, in the type 1 hypersensitivity reaction, which immunoglobulin is involved? Or type 1 hypersensitivity reactions, they are mediated by which immunoglobulins? Question aa chuka hai. So remember, type 1 hypersensitivity reaction, they are mediated by immunoglobulin E. It is known as a antibody. Immunoglobulin E क्या है? Antibody. So type 1 adverse drug reactions, they are mediated by immunoglobulin E. Okay. So upon the first exposure, the drug will be treated as antigen. Against that antibody will be there, and this antigen antibody reaction will be there. And okay, on first exposure, जब पहली बार आपको ड्रग मिला है, उस टाइम पे क्या होगा? ड्रग एज एंटीजन ट्रीट किया जाएगा आपको बॉडी में, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएंगे, कौन से? इम्यूनोग्लोबिन ई. और ये इम्यूनोग्लोबिन ये स्टोर होता है, किसमें स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड इन द मास्ट सेल along with the histamine and other chemicals. And upon the second exposure, what happened? Upon the second exposure, the antigen, upon the second exposure of antigen or drug, so antigen antibody reaction will be there, because आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी फॉर्म हो चुके हैं. तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, वहाँ पे मास सेल जो होता है उसका डीग्रेनुलेशन होगा, उसका डीग्रेनुलेशन मतलब ब्रेकडाउन होगा, एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ different chemicals like histamine, leukotrienes, prostaglandins, these platelet activating factor. Now these are responsible for the allergic reaction. These are responsible for the allergic reaction, pain, inflammation, edema. ठीक है? तो बेसिकली टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है? टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन, दे आर नोन एज anaphylactic reaction. What happens in this? A drug, when a drug is given to you, your body will treat the drug as antigen, and against that antigen antibodies will be formed in the body. What type of antibodies? Immunoglobulin. Now they will be stored in the mast cell. Okay, and upon next exposure, upon second exposure, what will happen? That antigen, if that antigen is given in the body, or if that drug is given in the body, so already there is an antibody, so antigen antibody reaction will be there. There will be degranulation of mast cell, and there is a release of histamine, leukotrienes, and prostaglandins, and platelet activating factor. So you know that this histamine will increase blood vessel को permanently बढ़ा देगा. It will cause bronchoconstriction. leukotrienes भी करेंगे वैसे, leukotrienes भी bronchoconstriction करेंगे. Prostaglandin क्या करेगा? It will cause pain, inflammation, necrosis. So that is responsible for the allergy, edema, and inflammation. Example. What is the example of type 1 adverse reaction? So bronchospasm. Example is bronchospasm caused by drugs like penicillin. So anaphylactic reaction or anaphylactoid reaction caused by penicillin. What is the example of type A or type 1 hypersensitivity? Anaphylactic reaction caused by penicillins. इसका example. Or anaphylaxis caused by cephalosporins, lignocaine, streptomycin, and iron dextran combination. So ये सब drug जो है, they are prone to type 1 allergic reaction. So we'll see the next part, type 2 allergic reaction. Type 2 allergic reaction is nothing but the cytotoxic reaction. It is known as cytotoxic reaction. साइटोटॉक्सिक क्यों बोलते हैं? सेल का टॉक्सिसिटी और सेल का लाइसिस होता है, इसको साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं, साइटोलाइटिक भी बोलते हैं. तो टाइप 2 hypersensitivity reaction or type 2 allergic reaction, they are also known as cytotoxic reactions or cytolytic reactions. So type 2 hypersensitivity or type 2 allergic reaction or cytotoxic reaction or cytolytic reaction, right?
Now, what happen when drug is given in the drug when drug is taken into the body or when drug is given to a patient? So that drug itself is not an antigen. The drug antigen nahi hai, but when it will go into the body, so it will bind to a proteins. आपके बॉडी में के प्रोटीन्स है उसको बाइंड करेगा. नाउ दिस ड्रग एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, नाउ दिस टू एक्ट्स एज द एंटीजन. पहले में क्या था टाइप 1 में कि जो ड्रग था वो इटसेल्फ एक्टिंग एज ए एंटीजन. और यहाँ पे टाइप सेकंड में क्या हो रहा है कि ड्रग आपको एंटीजन नहीं है, ड्रग आपकी बॉडी में जा रहा है, उसके बाद में आपकी बॉडी के प्रोटीन जो थे प्लाज्मा प्रोटीन या फिर कोई भी प्रोटीन हो सकता है उसको बाइंड करता है और बाद में वो प्रोटीन एंड ड्रग कॉम्प्लेक्स it is acting as antigen. So that complex is acting as antigen and will stimulate the formation of antibodies. Now that antigen antibody complex will activate the complement system which result in the cytotoxicity. Example क्या है उसका? Thrombocytopenia, agranulocytosis, aplastic anemia caused by these drug. कौन से drug? Carbamazepine, phenytoin, phenylbutazone, sulfonamide. देन ये ड्रग क्या है कि जो सल्फोनामाइड से कार्बामाइजेपिन है, फिनिटोइन है, फिनाइलब्यूटाजोन है. So these drug they will go inside the body. They are not antigen itself, but in the body they will bind to a particular protein. And now that protein drug complex will act as an antigen. Against that antibody will be produced, and antigen antibody reaction will be there, and it will stimulate the one complement mediated cell lysis. आपकी बॉडी में complement फिक्सेशन मैकेनिज्म होता है. तो उसमें क्या होता है कि सेल का लाइसिस किया जाता है, सेल का ब्रेकडाउन किया जाता है. सो दैट इज इन साइटोटॉक्सिसिटी. फॉर एग्जांपल ऑफ सच टाइप एलर्जिक रिएक्शन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एग्रेनुलोसाइटोसिस, एप्लास्टिक एनीमिया caused by this carbamazepine, phenytoin, phenylbutazone, sulfonamides. अगेन सपोज आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है. अगर बी वाला ब्लड ग्रुप अगर आपको देंगे, अगर बी वाला ब्लड आपको चढ़ाएंगे तो क्या होगा, मिसमैच होगा, आपको सिर्फ ए चलेगा. So if there is a mismatch of blood transfusion, there is also again type second cytotoxic reaction. तो अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, अगर आपको ब्लड ग्रुप बी है, अगर आपको ए वाला ब्लड ग्रुप दिया तो व्हाट क्या हो जाएगा, दैट इज मिसमैच. सो देयर विल बी हेमोलाइटिक रिएक्शन. तो आपका आरबीसी ब्रेकडाउन होगा वहाँ पे, साइटोटॉक्सिक टाइप सेकंड एडवर्स. और टाइप 3 adverse drug reaction, or sorry, type 3 allergic reaction or type 3 hypersensitivity reaction. They are known as Adrs reaction. They are known as Adrs reaction. And what happens? Drug or antigen will bind to the antibodies in the plasma. Okay, plasma में जो already antibodies है दूसरे उसको bind करता है. So drug or antigen will bind to antibodies in the plasma. Now this complex will be deposited in the blood vessels, in the wall of blood vessels, and where it will trigger inflammatory reaction and vasculitis. टाइप 1 एलर्जी जो होता है, टाइप फर्स्ट एलर्जिक रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि ड्रग एज ए एंटीजन ट्रीट किया जाता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, और जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, मतलब रिलीज ऑफ केमिकल्स होता है. टाइप सेकंड में क्या होता है कि ड्रग इटसेल्फ इज नॉट एंटीजन, वो बॉडी में आने के बाद में प्रोटीन को बाइंड करता है, और उसके बाद में वो प्रोटीन एंड ड्रग का कॉम्प्लेक्स जो है वो एंटीजन बोल के ट्रीट किया जाता है, और उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनती है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम को ट्रिगर करता है. कौन सा सिस्टम? कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट इन द सेल टॉक्सिसिटी, रिजल्ट इन द साइटोटॉक्सिसिटी. टाइप 3 में क्या होता है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. सो ड्रग और एंटीजन विल बाइंड टू एंटीबॉडी व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर नॉर्मल एंटीबॉडी. जो आपका नॉर्मल बॉडी का एंटीबॉडी है उसके साथ में कंबाइन होकर क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स जो है ड्रग और एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स that will be deposited in the wall of blood vessel. आपका जो blood vessels का inside layer होता है, wall of blood vessel, उसमें deposit हो जाएगा, and it will trigger inflammation and vasculitis. So that is known as a type 3 hypersensitivity reaction. So example is nothing but that vasculitis and inflammation result in the skin rash, then fever, arthralgia मतलब bone pain, lymphoadenopathy, gland जो आपके वो बड़े हो जाए, serum sickness, स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम. आपने ये बहुत बार जगह पे ये टर्म आने वाला है, स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम.
Stevenson-Johnson syndrome is a kind of hypersensitivity reaction. Type 3 hypersensitivity. Stevenson-Johnson syndrome type 3 hypersensitivity reaction. Mostly it is produced by this drug. कौन से? Phenylbutazone, carbamazepine, barbiturates, phenytoin and sulfonamide. तो सल्फोनामाइड्स का एडवर्स इफेक्ट होता है स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम. ठीक है, याद रखो. एस्पिरिन का भी एडवर्स इफेक्ट होता है स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम. टाइप 3 है हाइपरसेंसिटिविटी. टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी और टाइप 4 एलर्जी. टाइप 4 एलर्जी दे आर नोन एज डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी. क्या बोलते हैं उसको? डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी. तो जो टाइप 1 होता है उसको इमीडिएट भी बोलते हैं. टाइप 1 को इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी बोलते हैं. टाइप 4 hypersensitivity reaction or type 4 allergic reaction, they are known as a delayed hypersensitivity reaction, right? Now they are mediated by these cells known as a T lymphocytes and macrophages. इस टाइप का एलर्जी कौन मेडिएट करता है? T lymphocytes और macrophages. Now in this case antigen react with the receptor present on these cells. तो ड्रग जो है एंटीजन जो है वो किसके साथ रिएक्ट होता है? यहाँ पे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द lymphocytes, T lymphocytes or macrophages, and there is a release of lymphokines produces the allergic reaction. Example: contact dermatitis caused in the healthcare workers caused by penicillin. जहाँ पे पेनिसिलिन का टैबलेट्स बनता है ना इस कंपनी में, वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं, सो उसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मतलब ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ पेनिसिलिन व्हाट हैपेंस, देयर इज अ allergy on the skin, and as a contact dermatitis. So that is a type 4 hypersensitivity reaction. Type 4 hypersensitivity reaction, or delayed hypersensitivity reaction. Now another term is there known as a heterogenic disease or heterogenic disease, heterogenic disease or heterogenic disease. तो heterogenic disease और heterogenic disease क्या होता है? So again एक बार क्वेश्चन आ चुका है. तो this is known as a physicians induced disease or drug induced disease. आप बोलेंगे सर कि ये क्या है? ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं. physicians induced disease और drug induced disease मतलब क्या? आप डॉक्टर के पास गए आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डॉक्टर ने दी आपको दवा, और वो दवा के कारण आपको दूसरा ही प्रॉब्लम चालू हो गया. आप गए डॉक्टर के पास में कि सर मुझे सिजोफ्रेनिया हो गया है, पागल हो गया, वो पगले जैसे काम कर रहा हो. तो डॉक्टर ने क्या किया? आपको डॉक्टर ने डायग्नोस किया, उसने देखा क्या क्यों बोल रहा है, सिजोफ्रेनिया होगा, उसको मैनिया हो गया, साइको हो गया. उसने दे दिया आपको ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. तो एंटीसाइकोटिक ड्रग दे दिया आपको, बोले 4 महीने के लिए खाना है आपको. आपने 4 महीने खा लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग. ठीक है, आपको साइकोसिस का प्रॉब्लम तो चला गया, लेकिन आपको दूसरा प्रॉब्लम हुआ है. दूसरा प्रॉब्लम कौन सा? पार्किंसोनिज्म. So that's why these type of secondary disease, they are known as heterogenitis or physicians induced disease or drug induced disease. So after stopping the treatment, still toxic effect of drug persist in your body, or that may be carried in your body. आपको मेनिया, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन हो गया, साइको बन गया. ठीक है, वैसे बनना नहीं चाहिए कोई, लेकिन आपने क्या किया? एक कोई भंगार लड़की के साथ में प्यार किया और उसने आपको धोखा दिया और आप बन गए साइको. तो आपको आ गया ट्रीटमेंट. कौन सा ट्रीटमेंट? एंटीसाइकोटिक ड्रग. आप गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने दे दिया आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया हेलोपेरिडोल, आपको दे दिया फिनोथायासिन. ठीक है, दे दिया. अब 2-3 महीने तक ट्रीटमेंट ले लिया आपने, क्लियर हो गया आप, लेकिन आपको दूसरा प्रॉब्लम हो गया. कौन सा? ये पार्किंसोनिज्म. Because antipsychotic drugs जो होते हैं, most of the antipsychotic drugs, class 1 antipsychotic drug, they have a one adverse effect known as Parkinsonism. They will produce you Parkinsonism. Parkinsonism क्या होता है? ये Parkinsonism मतलब तो it is a kind of disease where there is deficiency of dopamine. इसमें इसका मतलब ये कि आपको डोपामाइन का डिफिशियंसी हो गया है. ये आपने एक मूवी देखा होगा, there is one movie in the Bollywood. अभी क्या है, आप थोड़ा सा नए जनरेशन के हो, हम भी उतने पुराने नहीं है, 90s का मूवी है. There is known as a Raja. There is one movie in the Bollywood known as Raja. In that there is one, I think Sanjay Kapoor is the hero. माधुरी दीक्षित is the actress and संजय कपूर का जो भाई होता है वो है परेश रावल.
और परिस्टावल को है ना एक डिसीज है उसमें, वो ऐसे आड़ा टेढ़ा चलता है और हाथ हिला के चलता है, मतलब देयर इज अ ट्रिमर्स इन हिज हैंड, ट्रिमर्स इन द लेग्स एंड हिज गेट इज नॉट प्रॉपर, झुक के चलता है और उसके मुंह में से जो सलेवा है वो भी टपकता है. That is known as a Parkinsonism. So siluria, seborrhea, then improper gait, tingling in the legs. They are the symptoms of Parkinsonism. So जो राजा मूवी है उसमें एक गाना है वो, किया लड़ाओ कभी किया चुराओ किया तूने किया जब, है ना, वो जो गाना, वो जो मूवी है उसमें जो परेश रावल है उनको क्या होता है, पार्किंसनिज्म. ओके, सो पार्किंसनिज्म इज अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग. जो क्लास 1 एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं उनका एडवर्स इफेक्ट होता है पार्किंसनिज्म. तो आपको साइकोसिस हो गया, आपने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसके बाद में आपको चला गया दूसरा ही प्रॉब्लम हो गया. सो दैट प्रॉब्लम इज नोन एज अ इटेरोजेनिक डिसीज और फिजिशियंस इंड्यूस्ड डिसीज और ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगेन आपको हो गया मलेरिया, आपको क्या है कि आपको कुछ भी हो सकता है, आपको हो गया मलेरिया, मलेरिया हो गया तो आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दे दिया क्या, क्लोरोक्विन, क्योंकि ये क्लोरोक्विन क्या है, एंटी मलेरिया, और आपको दे दिया क्लोरोक्विन, आपने ले लिया, 8-10 दिन के बाद में आपको मलेरिया चला गया, लेकिन क्या हुआ आपको, रेटिनोपैथी, मतलब आपके आईज में पिगमेंटेशन हो गया, दैट इज द रेटिनोपैथी. तो क्लोरोक्विन का एडवर्स इफेक्ट होता है रेटिनोपैथी. आपने बोला सर मुझे तो मलेरिया हुआ था, मैं मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए आया, लेकिन मुझे क्या हो गया, अभी आंखों में प्रॉब्लम हो गया, दैट इज अ ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज, ड्रग इंड्यूस्ड रेटिनोपैथी. सो इट इज नोन एज अ इटेरोजेनिक डिसीज. टर्म आपको याद रखना है, इटेरोजेनिक डिसीज, ठीक है, इटेरोजेनिक डिसीज क्वेश्चन आ चुका है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में. सो इट इज अ इटेरोजेनिक डिसीज, ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज और physician induced disease. Now we'll see the next. Now these are the different types of hypersensitivity reactions. Okay. Okay. So you can see this all hypersensitivity reaction once again by flow chart. Okay. So type 1 hypersensitivity reaction क्या बोलेंगे उसको? इसको बोलेंगे immediate type of hypersensitivity reaction or it is also known as a anaphylaxis. इसको क्या बोलेंगे? Anaphylaxis और anaphylactic reaction. Right? Anaphylactic reaction. Right? और type 1 hypersensitivity और allergic reaction known as immediate. तो इसमें क्या होता है कि drug will be treated as a antigen. Antigen will be treated, drug will be treated as antigen upon first exposure. Against that antibody will be formed and upon subsequent exposure, next time जब expose करेंगे उस drug को, so that drug and will act as antigen and already antibody जो बना है वो mast cell में store है. So there will be antigen antibody reaction, degradation of mast cell and release of these chemicals. Release of histamine, leukotriene, prostaglandin, and you will suffer from vasodilation, bronchoconstriction, edema. Okay, that is known as anaphylaxis. Now, if it is a localized, एक जगह पे है कुछ तो भी स्किन के ऊपर या फिर कोई legs में, it is known as a urticaria. If it is localized to a particular organ, known as a urticaria. And if it is a severe, पूरे शरीर में है तो उसको बोलेंगे anaphylaxis. So it is a type 1 adverse, type 1 hypersensitivity reaction or type 1 allergic reaction. और टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 एलर्जी इज नोन एज अ एटो एलर्जिक रिएक्शन. एटो एलर्जिक रिएक्शन, तो इसमें क्या है कि ड्रग इट इज नॉट अ एंटीजन, ड्रग अलोन इज नॉट अ एंटीजन, but when drug will go in the body it will bind to a certain proteins, so it will bind to a certain proteins or it will bind to a certain tissue, and then tissue drug complex or tissue protein complex will act as antigen, against that antibody will be formed. Now antigen antibody reaction will be there and there is a again allergic reaction manifestation such as a thrombocytopenia, hemolysis. Okay, drug causing autoallergy example क्या है उसका देखा है आपने. So quinine, methyl dopamine, chloramphenicol. Chloramphenicol is an antibiotic, methyl dopa is nothing but the drug used in the hypertension and quinine is an antimalarial drug. So type 2 allergy. Now we'll see the type 3. Type 3 allergy. Type 3 is known as a complement mediated allergy. ठीक है, complement mediated allergy क्या होता है, ड्रग आपका, ठीक है, ड्रग will be treated as antigen. Okay, and drug will be directly, drug is not an antigen, drug will go into the body, it will react with your antibody present in your blood. आपके ब्लड में जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज है नॉर्मल उसके साथ में रिएक्ट होगा and antigen मतलब drug antibody complex will be deposited in the
blood vessels in the wall of small vascular blood vessels, and then it will cause activation of complement, will cause allergic reaction and inflammation in the tissue. For example, these are the examples like glomerulonephritis, serum sickness, then your Stevenson Johnson syndrome and all that, vasculitis. Okay, so these are the type 3. Now type 4 and type 4 hypersensitivity or type 4 allergic reaction. They are known as a delayed type of hypersensitivity or cell mediated allergy. टाइप 4 को क्या बोलेंगे? डिलेड वाले हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी. अब इसमें क्या होता है? So drug will react with the receptor present on the T lymphocytes and macrophages, and due to that reaction there is a release of lymphokinins, and lymphokinins they may cause allergy. So ultimately local manifestation like allergy, contact dermatitis. Okay, then idiosyncrasy मतलब क्या है? इसके ऊपर मैंने पूरा बोला है आपको. It is a genetically mediated abnormal reactivity to a chemicals, which means particularly the basic defect is nothing but the genetic cause. So if any patient is deficient in the glucose 6 phosphate dehydrogenase, in that patient if you give some drugs on the oxidant, okay, like primaquine, nalidixic acid, quinine, so these drugs will cause hemolysis, will cause breakdown of RBC, and patients suffer from hemolytic anemia. That is known as type 4 idiosyncrasy. Now mechanism क्या होता है इसमें? idiosyncrasy का mechanism, how there is idiosyncratic reaction when if patient is deficient in the glucose 6 phosphate dehydrogenase. ये एंजाइम क्या है? पेशेंट में नहीं है, पेशेंट के आरबीसी में क्या है? नहीं है. So this glucose 6 phosphate dehydrogenase is very very important for the synthesis of glutathione. Glutathione बनने के लिए जीपी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इंपॉर्टेंट होता है. तो ये अगर एंजाइम नहीं है तो ग्लूटाथायोन का जो काम है रिडक्शन करना. So glutathione reduction is not satisfactory in the body. Okay, and in that case glutathione का काम है रिडक्शन करना, मतलब फेरस का फेरिक करना. काम क्या है उसका? फेरिक है, उसको Fe++ फेरस करना. So iron in hemoglobin tends to become ferric from rather than ferrous. Okay, once it becomes ferric, then it becomes useless, and then RBC has to be break down. So RBC will become susceptible for oxidant drug and will lead to hemolytic anemia. That's how there is a idiosyncrasy in the patients.